That was one thing. Secondly, today we'll practice on the Jivayatana and Rasayatana. So we'll request you to get some things to eat, a different taste altogether. No? Example, we've got this sweet things, biscuit and this banana. And we also got the extremely bitter thing. This is an extremely bitter thing. It's called Kadwa Badam, which is used for diabetic, to control the blood sugar. It's absolutely like poison. So actually its coating is poisonous. So you remove this coating, इसका जो छिलका है हटा देते हैं, इसके बीच के जो वो भी इतना भयंकर कड़वा है कि इसका कड़वेपन कई लंबे समय तक रहता है. And then we've also got this more, ये शायद ना हो आसानी से, ये दीपक जी ने मैडम को कहा था कि खाना शुरू कर दो ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे. देन देयर इज दिस काली मिर्च, तो कॉमन चीज़ है. इसको अगर आप मुंह में डालेंगे तो इसका स्वाद आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा इन सब से. एंड इट मे बी बिटर स्लाइटली, इसका सैला होता है. सो यू कैन गेट ए फ्लेवर ऑफ various kinds of experiences from the tongue and the taste. And then it is very, उसके बहुत सारे डायमेंशन है. पहले भी हमने माइंडफुल ईटिंग का एक्सपेरिमेंट किया था. सो इट इज वेरियस डायमेंशंस, तो उसको हम अनुभव करने का प्रयास करेंगे आज और कल में. So we'll now start session. So we'll start with, as usual, with our practice of samadhi, try to mind collect ho jaye, and then we become more capable of looking at the phenomena which we experience in great detail. Okay, जितना intensity से हम उसको देखेंगे उतना हमको वो clarity आएगी. So we'll switch off the light and practice accordingly.
Let us start our reflective contemplation on जिह्वा संस्पर्श वेदना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जिह्वा पे जब स्पर्श होता है तो कैसी वेदना जागती है। तो जिह्वा पे स्पर्श के लिए कुछ हमको टेस्ट करना होगा। जैसे मैंने निवेदन किया था, वी कैन टेक सम ऑब्जेक्ट। So we start from the, of course, जो भी हम भोजन करते हैं उसके कई आयाम आते हैं, तो अभी तो भी समय कम है। विल फोकस ऑन द जिह्वा संस्पर्श वेदना लोग, बिकॉज भोजन जब भी जिह्वा पे कोई स्पर्श होता है उससे पहले उसको देखते हैं, उसको टच करते हैं, एंड देयर अदर ऑल अदर सेंस डोर्स गेट एक्टिव। सो विल टेक दैट टुमारो। अभी सिर्फ डायरेक्टली जिह्वा संस्पर्श वेदना की बात करते हैं। सो वी टेक अप से दिस फूड आइटम and then we take it और इसको we put it in the mouth and see what is the taste। इससे क्या स्वाद आता है, उसका जो रस है वो हमको प्रिय लगता है, अप्रिय लगता है या न्यूट्रल लगता है। we can see that way। so that will be basic identification। तो 18 प्रकार की जो वेदनाएं हैं वो कैसे बनेंगी, जो सूत्र में दिया गया है वो मन की बातें, मनोवेदना की बात की गई है। बट वी कैन हैव डायरेक्टली 18 in this manner also, that is the each sense door the experience can be pleasant, unpleasant and neutral। जैसे जीवा संस्पर्श वेदना है, तो जीवा पे आप जो खा रहे हैं उस पे वो प्रिय लग सकता है, उसकी महसूस हो सकता है, अप्रिय हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो this that way also is the direct this cause kind of segregation or classification of 18 Vedanas। Okay, so we can taste it actually and see whether we feel it pleasant, unpleasant or neutral। तो and then उसको देखेंगे कि वो जो फीलिंग इसको डालने के बाद शुरू कर टेस्ट करने के बाद होती है, क्या वो कांस्टेंट रहती है, बदलती रहती है in terms of the nature of that particular feeling। So you'll see that also is changing, and eventually it will become of a particular kind। So we can taste it and see for ourselves कि किस तरह से जिह्वा संस्पर्श वेदना उत्पन्न होती है, कि हाँ उसमें ग्रेटिफिकेशन है, क्योंकि प्लेजेंट होगा तो ग्रेटिफिकेशन होने का खतरा है, and where is the danger in that gratification and how we can come out, that is a secondary contemplation। but अभी तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके हम देखते हैं। अगर हम एक ब्लैंड ऑब्जेक्ट पे खाते हैं, जैसे प्लेन रोटी हो, प्लेन ब्रेड हो, मुंह में डालें तो उसका शुरू में एक न्यूट्रल टेस्ट के हिसाब से रहता है। बट देन इफ यू कीप ऑन chewing it, you will see there will be a change in the taste। कोई मीठी चीज़ है तो उसका तो टेस्ट अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, एज इट कैन डिजॉल्व चेंज हो जाता है। देन वी कैन टेक समथिंग बिटर, जैसे ये काली मिर्च है, इसका शेप एंड साइज भी डिफरेंट है। विल डिस्कस इट टुमारो।
और इसको मुंह में रखने के बाद, चबाने के बाद क्या सब फीलिंग होगी, और उसका कंट्रास्ट पिछले एक्सपीरियंस से कितना ज़्यादा है, वी कैन सी दैट. So when I I started chewing it, तो मुझे शुरू में तो न्यूट्रली लगा, and then slowly as its taste enters onto this tongue, जिह्वा के स्पर्श में आता है वो, तो you can see the enormous kind of difference in the taste between this and the previous biscuit which we were eating, small amount. और उसका lingering effect रहता है. Of course, if I had just swallowed it, nothing would have happened. क्यों? क्योंकि जीवा पे स्पर्श ही नहीं हुआ ठीक से. अगर मैं काली मिर्च को जीवा पे रख दूं, तो उस पे जो स्पर्श होगा वो फिजिकल स्पर्श होगा, टेस्ट का स्पर्श हुआ ही नहीं. एंड आई swallow it, finished. There's no bitter, कड़वापन लगेगा ही नहीं. So you can see it is especially the sensitivity of the tongue which gives the taste, not the food, not what we are taking. It's the interaction of the two that gives the taste. इसीलिए वो दवाइयाँ खाते हैं कड़वी, तो कहते हैं इसको swallow कर लो. उसको पिल जो कैप्सूल है उसके अंदर इतनी बिटर मेडिसिन होती है. What do you say? You swallow it. Don't chew it, because medicine will go inside the stomach and do its own thing. That's उसका जो coating है वो एकदम खत्म हो जाता है, and then it will spread into the body and produce its effect. And कई बार आपने देखा होगा उसकी smell बाद में आने लगती है. If you take this capsule, then you feel this sudden effect of its smell coming up to the mouth and changing the flavor, taste of the mouth. So these are how these simple foods can do the change. We have something else. We have a banana here. It doesn't look very nice in looking. So that itself creates some feeling. But of course, if we cut it and try it out, it will be a pleasant feeling, but of a different kind. इसकी खाने की फीलिंग और जो बिस्किट खाया गया, बहुत डिफरेंस है उसमें. So the nature of taste is not something you can express in words. आप बिस्किट खाया वो भी मीठा था, केला खाएंगे वो भी मीठा ही है, तो is that मीठा and that मीठा same? They're not. So that is the difficulty of putting in words or experience. So we can see this banana a little bit. इसका शुरू का पोर्शन ठीक नहीं था. So a little bit of banana, and when I eat it and I remember what was the taste of the biscuit, I find a total difference.
You can see the lingering effect of banana because it is semi-solid. It remains for a longer time. So you can see those differences in the taste. If we look at them as objectively, they will never captivate us. If we don't look at them objectively, they will captivate us. उसमें gratification होना शुरू हो जाएगा. You begin to enjoy it or you begin to feel unpleasant about it. So that's the power of observing the Vedana. That you begin to see it objectively और वो फिर हमारे पे उसकी प्रतिक्रिया होने की संभावना काफी कम हो जाती है, अपने आप ही कम हो जाती है, क्योंकि हम उससे कुछ लेवल पे डिसआइडेंटिफाई कर रहे हैं जब उसको हम देख रहे हैं. और न्यूट्रल टेस्ट तो सामान्यतः काफी बार हम पानी पीते हैं, जैसे दिस इज वाटर बॉटल. इफ आई टेक दिस वाटर, एब्सोल्युटली न्यूट्रल टेस्ट, बट you know how significant it is to take water. So we can see that and see the effect and see the difference between this and this three tastes: bitter, sweet, and neutral. आज दिन में हम जब भी भोजन करें, वी कैन बी बिट मोर माइंडफुल एंड फील कि वे जो जीवा संस्पर्श वेदना है वो प्रिय है, सुखद है, दुखद है, क्या सुखद है, दुखद है. और देखेंगे कि जितना जितना हम उसको ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उतना उतना प्रतिक्रिया की टेंडेंसी कम हो जाती है. और एक आध बीच में कभी भूलेंगे भी तो पता चल जाएगा कि प्रतिक्रिया हो गई. सो इन दिस वे we can, in our through our daily life, of observation of daily life, we can become more and more aware of the operation of Vedana Pachyatana at the tongue sense base. जीवा पे जो जीवा आयतन जो है
जीवायतन और रसायतन का जो स्पर्श हो रहा है, उससे जो वेदना जागती है, उसका एक प्रामाणिक अनुभव हमको होता रहता है दिन में। जब भी कुछ खाएंगे पिएंगे तो होगा ही डेफिनेटली। We have to be mindful to notice it and see the impact it produces and recognize that this its difference from the other Vedas. अभी तक हम पांचों तरह की शारीरिक वेदनाओं को देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। जस्ट रिकलेक्ट, देखने के ऊपर जो वेदना जागती है, सुनने पे जो जागती है, सूंघने पे जो जागती है, छूने पे जो जागती है, और टेस्ट करने पे जागती है। तो ये पांच जो वेदनाएं हैं, इनमें there is a kind of gradation from gross to subtle. Of course, mind की जो बात में करेंगे तो बिल्कुल extremely subtle है and therefore becomes more difficult to see. So grossest, it depends whichever works for you, depends on the sensitivity. So gross में जैसे touch at the body, touch at the tongue, it is the gross, it's something which is physical. शरीर में कोई physical touch हो रहा है, जीभ पे physical touch हो रहा है. So you can see they are going to have a very strong impact. And we know from our experience कैसा ही होता है. शरीर के ऊपर अगर कुछ गर्म लग जाए, बहुत ठंडा लग जाए, तो really becomes very difficult to observe it objectively. इस तरह खाना खाते समय अगर कुछ बहुत कसैला आ जाए, बहुत टेस्टी, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट हो, मीठ ज़्यादा हो या नमक ज़्यादा हो, then it produces a very strong feeling which usually results in reaction. Then we go to subtler sense doors where the impact are there, and you can see the sound. Again, sound has, because में words होते हैं जिसका meaning होता है, तो वो फिर भी impact करता है. Smell का कोई meaning नहीं है, तो वो भी है subtle, but it is subtler than sound, at least in my assessment. So sound, the smell is subtler, but it has a physical aspect. The eye sense door is the subtlest of eye, क्योंकि उसमें contact जो हो रहा है वो at the conventional level we'll say it's not physical. Because at a scientific level you say photons are coming. There's a lot of difference between photons and sound waves and photons and smell. Smell तो molecular level में molecules अंदर जा रहे हैं, physically जा रहा है. आँख के अंदर कुछ जाता नहीं है जब हम उसको देखते हैं, जो ऐसे हमको महसूस नहीं होता कि photons आँख में जा रहे हैं, ऐसा महसूस नहीं होता. They're too subtle. So you can see the gradation of subtlety and the degree of difficulty of noticing those feelings. आँख की जो ऑब्जेक्ट देखते हैं तो फीलिंग देखना ही मुश्किल हो जाता है, प्रतिक्रिया पहले हो जाती है. भोजन के प्रति या टच के प्रति कंपैरेटिवली आसान है. So that's another way of looking at the sensation, the feelings which arise वेदना के प्रति देखने का. और जो मनो संपस्सा वेदना है वो तो बहुत ही सटल है. उसकी मन में विचार जागा, वो भी सटल है, वो भी कोई ग्रॉस चीज तो है नहीं. और उसके ऊपर प्रतिक्रिया हुई, उसके ऊपर वेदना जागी, वो और सटल है. तो उसको देख पाना काफी मुश्किल हो जाता है. बट वो क्योंकि विचार हमारे चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो वो प्रतिक्रिया हम होती रहती है, हमें मालूम नहीं पड़ता है. सो ट्राइंग टू बी माइंडफुल ऑफ दैट इज देयरफॉर क्वाइट अ चैलेंज. तो इसीलिए शायद भगवान ने ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज दी कि यू रिमेंबर समथिंग प्लेजेंट, यू रिमेंबर समथिंग अनप्लेजेंट, एंड देन द इफेक्ट विल बी स्ट्रांग एंड यू विल बी एबल टू feel that. We'll do it when we come to the Manosampasaya Vedana. So I think time is up. We can take 1 or 2 minutes if there are any questions or queries. जो ये स्पर्श होता है मीठा खट्टा कड़वा, लेकिन इसको जान लिया, इसको जानने मात्र से वो
कैसे कम हुआ? देख लो, करके देख लो ना, पता चल जाएगा। जानने के बाद उसका जैसे हमें अनुभव हो गया, फिर ये जीवन में जैसे उसका उसके प्रति जो भोजन के प्रति जो आकर्षण है, वो यही तो है। प्रिय वेदना, भोजन मुंह में गया, प्रिय लगा, मैंने उसको देखा ही नहीं, प्रतिक्रिया की और खाता चला गया, खाता चला गया। मतलब प्रिय लगा तो देखा, देखा नहीं तो खाया जाएगा ना। अगर हम उसको देखें, ये प्रिय वेदना है और हमारी समझ है कि इसको टेस्ट में डूबना खतरा है, आस्वादन तो है बट उसमें खतरा है। इफ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, देन सजग होने का काफी पॉसिबिलिटी रहती है। अगर हम उसके वेदना में, प्रिय वेदना जो हो रही है जीवा पे, उसको देखते नहीं है कि ये अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, और उसके प्रति प्रतिक्रिया करके खाए जा रहे हैं, खाए बहुत अच्छा है, एक और चम्मच खा लो बहुत अच्छा है, सो देन वी गेट इनटू ट्रबल। that is the I mean practical utility of observing this. मतलब उसको जानने मात्र से वो उसका असर कम हुआ। अगर उसको हम ऑब्जेक्टिवली जानेंगे, और हमारे बीच पीछे प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा है, तो कहा जाता है ना कि ये अनित्य है, दुख है। अभी जैसे पहले भी चर्चा हुई थी ना कल, कि जो प्लेजेंट फीलिंग है उसको दुख के रूप में देखना, दैट इज द एस्केप, दैट इज हाउ वी एस्केप फ्रॉम इट, अदरवाइज तो फंस ही जाएंगे। फीलिंग को दुख के रूप में देखना तो ठीक है, ये हाँ, बस यही करना है। हम बुद्धि से तो कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन करते नहीं है। उसको करना, उसको समझना है। अगर हम उसको उस तरह से समझेंगे तो फिर उसके प्रति अटैचमेंट नहीं होगा ना। अगर हमें मालूम पड़ जाए कि ये चीज मीठा है लेकिन ये जहर है, तो खाएंगे क्या? कोई कह दे भाई ये जहर है लेकिन है बड़ा मीठा, नहीं खाएगा कोई, समझदार आदमी तो नहीं खाएगा। दैट इज द वे वी हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन द फूड। ऑफ कोर्स उसके फूड के रिफ्लेक्शंस तो बहुत very very strong reflections are given in the scripture, which may not, host householders may not like even to hear it, so I don't I will not like to speak about that. There is a sutta called Putta Mamsa Sutta. If you read it, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको पढ़ के। इसकी जैसे भोजन करते हैं, खाएंगे, स्वाद मतलब लग रहा है, जान लिया हमने कि लग रहा है मीठा है, खट्टा है, पर भोजन खाएंगे तो ये अब मीठा खट्टा करके छोड़ तो नहीं देंगे ना। हाँ, फिर उतना ही खाएंगे जितना आवश्यकता होगी। जब हम उस तरह से देखेंगे तो उतना ही खाएंगे जितना आवश्यकता होगी, तो उससे फिर उसके प्रति जो आसक्ति है वो टूटेगी, कम होगी, कम होती है। मतलब उसमें दिक्कत ये है ना, दैट इट इज एज्यूमिंग कि वो जो ग्रेटिफिकेशन, डेंजर और एस्केप का फ्रेमवर्क है वो मौजूद है। Can't hear you. आई मस्ट बी योर स्पीकर। मैं कह रहा हूँ कि उसमें दिक्कत ये है ना, दैट इट इज एज्यूमिंग दैट वो जो ग्रेटिफिकेशन, डेंजर और एस्केप का फ्रेमवर्क है वो मौजूद है हमारे पास। Yeah. So I think in that sense to say कि देखना, I mean yeah, देखना is like the first step, but it's presupposing the presence of Anya. Yeah. yeah, exactly, yeah. Anya is not there, then you'll ignorance is there, avidya, तो देखते रहो और खाते रहो, खाते जाओ, and you'll keep on enjoying the food. No? You're not seeing the danger in that gratification. So Panya is a fundamental, unescapable constituent of everything. हमारी साधना में अगर प्रज्ञा नहीं है साथ, जो बेसिक एलिमेंटल लेवल प्रज्ञा भी नहीं है, तो फिर तो साधना नहीं हो पाएगी। लेकिन भोजन को खाते समय उसका वो तो करना है ना कि भाई हाँ भाई भोजन खा रहे हैं, ठीक है। हाँ, जितना ऐसा हमको तो नहीं है ना कि ये पहले खाते ही मुंह में डालो और जी कड़वा है, एकदम वही तो बात है ना। You just neglect. You don't have to eat. We don't neglect, no, not at all. We don't neglect, we don't indulge, we follow the middle path. How much food is required, we eat only that. And we eat only for the sake of preventing the body from creaking. That's it. हम सिर्फ भोजन इसलिए करेंगे, जो हम contemplation करते हैं ना,
भोजन की कंटेम्पलेशन जो वृक्षों की हमने कई बार चैंटिंग में किया है, हम वो इसलिए करते हैं, भोजन इसलिए करते हैं कि शारीरिक दुखद वेदना समाप्त हो, भूख के कारण उत्पन्न हुई दुखद वेदना समाप्त हो, और उसकी जगह कोई और नई दुखद वेदना ना हो जाए ज्यादा खाने से. दैट्स इट. दैट सम्स अप द होल प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग मॉडरेटली. विशाल ने लिखा है द मॉन्क स्ट्रेटजी ऑफ मिक्सिंग all the food together is a good one. Yeah, but people like me enjoy that actually. That is a problem. Yeah, that is true. For most people it is like that, but you can still enjoy it even after doing it. You can still fall a prey to the enjoyment of pleasant feelings. That reduces to some extent, but it's not a foolproof measure. I know it personally. लेकिन शरीर को आप सब मिक्स करके भोजन दे दो, डालते जाओ, मतलब ये लगता नहीं कि क्या कर रहे हो आप, ये खा रहे हैं आप. नहीं खा रहे हैं, पर साग खिचड़ी पका के, मतलब आप खाना भोजन भी तो स्वाद से लेना चाहिए. वही तो दिक्कत है ना. दैट इज द पॉइंट. थोड़ा तो देख के, दैट इज द पॉइंट. थोड़ा शरीर को डाले जाओ कि जैसे जैसे कूड़ा करकट है शरीर, तो मतलब जो भी भोजन चाहे मिक्स नहीं करो, सेपरेट करो, तो उसका टेस्ट तो लिया जाता है ना. हाँ, ये हाँ, उसके साथ ये जानना जरूरी है कि भी हाँ, सिर्फ जानना जरूरी नहीं. आई थिंक उसके बाद क्या करना, जानना ये है कि ये टेस्ट जो है, इट इज, इस टेस्ट का स्वाद करना एक और जन्म हो जाएगा. ये इस तरह से जानना, जितना मैं स्वाद लूंगा उतना मेरे जन्म बढ़ते जा रहे हैं, उतना तृष्णा बढ़ती जा रही है. आई मीन इट्स अ फियर्स वे ऑफ सेइंग, बट वी हैव टू डू दैट, अदरवाइज कैसे निकलेंगे? निकलने का चांस ही नहीं है. इसका मतलब ऐसा भोजन करो जो उसका कोई स्वाद नहीं है. वो तो फिर वो बात हो जाएगी ना. हम भाग रहे हैं, फिर हम वी आर नॉट विलिंग टू फेस इट. यू हैव टू फेस इट. यू हैव टू फेस इट. वो तो वो हो जाएगा ना. यू यू रन अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस. नो, you have the experience and see it is impermanent, it is suffering, it is impersonal. अनिच्छा दुक्खा अनात्ता वो बहुत आवश्यक है. उसका कोई escape नहीं है. there is no solution to that other than that, unless these three characteristics are seen, or we see gratification, danger and escape. कोई भी paradigm आप use कर लो, you see their arising, passing away, whichever way. जो हमने 7 चीजें पढ़ी थी ना, 7 तरह से देखते हैं अनुभव को, उसका नेचर को समझते हैं, उसको उदय को समझते हैं, समुदय को समझते हैं, उसके निरोध को समझते हैं, या उसके मार्ग को समझते हैं, ग्रेटिफिकेशन को समझते हैं, डेंजर को समझते हैं. वी सी दैट. स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है, और समझ रहा हूँ ये मजा जो है मुझे अनगिनत जन्म और देता जाएगा अगर मैं इसको एंजॉय करता जाऊंगा. दैट काइंड ऑफ कंटेम्पलेशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल for someone who is very strongly attached to food. In fact, for all of us, but especially for those who are attached to food. ताकि उसका खतरा हमारे सामने रहे. Not only खतरा in terms of obesity, but in terms of giving rise to future births. That's very crucial. क्योंकि हमारी सारी साधना, हमारा उद्देश्य, हम यही कर रहे हैं कि जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलें. ये हमारा, इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं. Sir, did you technically separate taste from feeling? Maybe I missed it. I wasn't so focused. एक आप कुछ जिक्र कर रहे थे कि these are the tastes and then the resultant feelings may be different according to one's sanya. Is that the point? Just technically? The जिह्वा संस्पर्श वेदना में, क्योंकि हम उसको क्लासिफाई वो भी करते हैं ना सामान्य भाषा में, मीठा, नमकीन, कड़वा, कसैला, ज़्यादा मीठा, हल्का मीठा, तो वो सामान्य भाषा में उसको आप टेस्ट कह सकते हैं. अब किसी को मीठा पसंद है, किसी को नहीं है,
किसी को मीठा खाने से अप्रिय वेदना होती है, जैसे मैडम को ज्यादा नहीं होती, और किसी को कड़वा खाने से अप्रिय वेदना होती है, किसी को नहीं होती है। कोई जो है हरी मिर्च को ऐसे खा जाता है। So the feeling which arises is the संज्ञा influences the जिस जो हमारी सामान्य कैटेगराइजेशन है फूड की, मीठा, कड़वा, ज्यादा मीठा, हल्का मीठा, दिस काइंड ऑफ, ज्यादा नमक, कम नमक, those are the kind of tastes, but the feeling produced by them will depend. जैसे अगर मैं कम नमक वाला खाता हूँ तो ज्यादा नमक वाला मुझे बहुत अप्रिय लगेगा, लेकिन मैं जो कम नमक वाला प्रिय लग रहा है जो दूसरे को, वो बिल्कुल ऐसा टेस्टलेस लगेगा. So that's the feeling which arises based on sangya and conditioning. So because food is such an important part of our existence, and in some cases the only important part, so then you have to really put a lot of effort in understanding this Vedana. So we'll do that tomorrow also. We'll look at it from other perspective, because food का interaction सिर्फ taste के माध्यम से नहीं होता, other interactions also operate. So we'll discuss them tomorrow. कल उसकी चर्चा करेंगे. और फिर जो फ्रेमवर्क्स आप बता रहे हैं, ग्रेटिफिकेशन, डेंजर एंड एस्केप इज वन, नेचर, अराइजिंग एंड पासिंग अवे इज द अदर. उसमें पासिंग अवे का मार्ग भी है, दैट इज द फोर्थ, सो 7 हो जाते हैं. इट इज दैट फोर्थ नोबल ट्रुथ पैराडाइम जो हमने किया था ना, 7 तरह से एनालाइज करना चाहिए. पहले था कि 4 तरह से, फिर था 7 तरह से. तो 7 वाला इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ looking at every experience, which is applicable to anything and everything. Every experience can be analyzed in that manner. तो उसको उस तरह से काट तोड़ के देखते हैं, तो then the experience does not kind of captivate us. Either way. And how is that related to, I'm sorry, ये मैंने पहले भी पूछा था ना, I just don't seem to get it. How is that related to वो जो निबिद्धा, विराग, विमुक्ति पैराडाइम है, उन इनका क्या, how do we relate? All this practice leads to that. All this practice of seeing the danger, of seeing the gratification and danger, बार बार ग्रेटिफिकेशन डेंजर देखते हैं ना किसी में, तो you get fed up here. एक तरह से इसको खाने में मजा आ रहा है और दूसरी तरफ से में खतरा है. So you do it a few thousand times or a few hundred lives, and then you get, कान पकड़ लो भाई, अब नहीं, और नहीं, बहुत हो गया, बस अब नहीं. So you get, उससे मोह भंग हो जाता है, you know, and that is the beginning of the escape from the world. So we, all of us have to go through repeated experiences of that kind. खाएंगे खतरा होगा, सुनेंगे खतरा होगा, म्यूजिक के प्रति, भोजन के प्रति, देखने के प्रति, वीडियो देखने के प्रति, so many traps now we have, and we get trapped. किसी को कुछ. So if you keep on observing the gratification, तो है तभी तो कर रहे हैं, but be aware of the danger. That's it. The moment you are aware of the danger, फिर आदमी घबराता है, यार क्या कर रहा हूँ मैं, फिर पीछे हटता है थोड़ा, कुछ दिन के लिए याद रहता है, फिर शुरू हो जाता है, फिर करता है, and कुछ जीवनों के लिए याद रहता है, फिर कुछ. So life after life we have been doing it, and sometime time comes and you get just fed up. कितना करना है मुझे, कितने जीवन ऐसे ही करते रहना है मुझे. Once that kind of a thought process arises, that the inability to get release is there, spiritual unhappiness. The निरामिस दुखद वेदना, जैसे सतीपट्ठान में सामिस और निरामिस का जो डिस्क्रिप्शन है, exactly the same paradigm. So just to be clear, वो जो 7-point framework है, that is something we use as a contemplation, and that takes us to the release का जो sequence है.
That is the way we begin to get this, different people will get disillusioned differently. जैसे वो जो अनंत लखन सूत्र है उसमें भगवान सिर्फ this is not me, not mine, not myself, उसी के आधार पे भिक्षुओं के लिए sufficient है. Once one sees that this is not me, not myself, this is anicca, dukkha, anatta, one gets disillusioned. So somebody is so, उसकी इतनी समझ पहले ही है कि वो देख उसको इतना ही समझ आ जाता है तो वो he gets disillusioned by that. People like us need to really experience it, get gratification in it, and then see the danger in it, and then suffer, and then do it again and again and again till we really get fed up. And say, छोड़ो भाई, खाना उतना ही खाओ यार जितना काम चल जाए बस, और don't bother about जो मिल जाए खा लो. That's the way the bhikkhus operate. That's the way renunciate would operate. जो मिल जाए खा लो, देख लो कि खाने लायक है, और इट मेरी क्षुधा को शांत कर दे ताकि मैं जो काम करना है मुझे वो कर सकूं. So then that's the way the paradigm begins to change. Similarly with all other sense doors, all other sensory inputs, क्योंकि वो भी हमारे भोजन है ना, sensory inputs भी भोजन है. बस हमको चाहिए, we want contact with every sense, and that has to be in the light of wisdom. We see it in a different manner. So in case of Anattalakhan, he's actually not using this framework because there is very high level of wisdom available. Very, very true. So depending on the audience, कई बार 4 पे ही रुक जाते हैं वो, 4 पैराडाइम पे, कई जगह 7 पे, कई जगह 3 ही है सिर्फ, gratification, danger and escape. So depending on the audience sitting in front of him, he must be, वो तो देख लेते होंगे ना इसके इनकी कहाँ पे ये बंधे हुए हैं, ये ग्रेटिफिकेशन बंधे हुए, तो इनको चलो वहीं से शुरू करो. ये उसके उदय को देख ही नहीं पाते, ये उसको परमानेंट समझ के उसी में एंजॉय करते रहते हैं, तो इसको इनको उदय और व्यय की तरफ ध्यान दिला दो. दैट्स द काइंड ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ ए ग्रेट टीचर लाइक द बुद्धा. हमारे लिए शायद सारे ही जरूरी है, because you're so trapped in the things in the world that different ways of contemplation, पता नहीं कौन सा हमको सूट कर जाए, कौन सा हमको हिट कर जाए. Try it out. Whichever hits us, fine. So thank you all, Bante ji, for your